students, we are going to cover exploratory testing. It's an important topic in the context of software testing today. हमारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो रही है या उनका जो मोस्टली जो ट्रेंड है उसके एतबार से एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हैज़ गेन वाइडर एक्सेप्टेंस और इट नीड्स क्लियर कट डेफिनेशन एट अंडरग्रेजुएट स्टेज. एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज़ अ स्टाइल. अच्छा, अब यह मैं नहीं कह रही कोई टेक्निक नहीं है. इट्स अ स्टाइल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट emphasizes personal freedom and personal responsibility of individual tester to continually optimize quality of his or her or their work. Acha, by doing what? By treating test related learning, test design, test execution, test results, interpretation, reporting, all activities either done in parallel or in sequence, whatever they feel like. This was said by Cam Kenner. Achha, so it is about exploring to understand what software can do and cannot do. It emphasizes personal freedom and responsibility of the individual tester. Test cases are not created in advance, but testers check the system on the fly and implement those test cases. अब आप गौर कीजिए, पहले हम क्या जो एडवोकेट करते रहे थ्रू आउट दिस कोर्स कि जनाब पहले टेस्ट डिज़ाइन होगा या वो आपके स्पेसिफिकेशन से निकल रहा होगा, पहले उसको आप करके उसकी और पॉसिबल इनपुट्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, आप हर चीज़ को करके रखेंगे, फिर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आप उसका आप देखें, हमने जब पहले अभी 2 मॉड्यूल पहले हमने देखा कि हम उसका टेस्ट एग्जीक्यूशन जब जो हम टेस्टिंग मैट्रिक्स में थे कि जनाब हम हर उसके लिए एग्जीक्यूशन साइकिल को रिपोर्ट करेंगे. यहाँ थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट कर रहे हैं हम. मैट्रिक्स अभी कलेक्ट हो सकते हैं या होंगे, लेकिन अब हम थोड़ी लग्जरी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द टेस्टर शिफ्ट कर रहे हैं. बोथ टेस्ट डिज़ाइन एंड टेस्ट एग्जीक्यूशन आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली. सो टेस्ट डिज़ाइन का एलिमेंट निकला नहीं है, टेस्ट डिज़ाइन होगा. पहले था सारे के सारे इन एडवांस डिज़ाइन हो गए. अब हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म्ड इन अ साइमल्टेनियस मैनर. नो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन फॉर टेस्ट स्क्रिप्ट्स, टेस्ट कंडीशंस, टेस्ट केसेस. फॉर्मल नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जरूर होगी. ओके, टेस्ट लॉगिंग इज परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम एज द टेस्ट एग्जीक्यूशन. जैसे जैसे टेस्ट एग्जीक्यूट करते जाएंगे साथ साथ टेस्ट को लॉग करते जाएंगे आप. ड्यूरिंग टेस्ट लॉगिंग वी डॉक्यूमेंट की एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट फंक्शनैलिटी इज टेस्टेड, व्हाट डिफेक्ट्स हैव बीन फाउंड एंड एनी थॉट्स रिगार्डिंग फर्दर टेस्टिंग. अब आप देखिए, हम इधर से निकलते हुए इसका मकसद ये हुआ कि हम थोड़ा सा एक काइंड ऑफ वेरी फिक्स ग्राउंड से एक थोड़ा रिलैक्स्ड ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं. ओके, सो इट इज़ नॉट ए टेक्निक. जैसे मैंने शुरू में कहा, इट इज़ नॉट ए टेक्निक, इट्स एन अप्रोच. What actions you perform next is governed by what you are doing currently. अब आप गौर कीजिए, हम ये कोई नई टेक्निक इंट्रोड्यूस, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वेब टेस्टिंग थी, UI टेस्टिंग है, यूजिबिलिटी टेस्टिंग है. ये क्या है? इट इज़ नॉट एनी टेक्निक, इट्स एन अप्रोच टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग और डूइंग टेस्टिंग. और इसमें टेस्ट केस डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन पैरेलल चलेगी.